All done? Yes, sir. Definition of a memo. Memorandum is considered inside correspondence. A memo is considered inside correspondence, which means a memo is written inside the organization. Memos को कभी भी organization के बाहर नहीं भेजा जाता है. Inside. Oh, nice. Because you are sharing something important, official. This is official correspondence, and you are writing to anybody who is working in the organization. So a memorandum is considered inside correspondence. The second point is it is written to someone working in your company. Write the main points in bullets. You do not need to write the whole sentence. And this is a statement which you want to share to a particular person in a particular way. Any information that you want to share with anybody in the company. It is a written statement. Memos always given in it is always documented. They cannot be oral memos. जब भी आप देंगे तो एक लिखित रूप में देंगे, written document. मेमो को लिखित रूप में दिया. So the 3 points. Memo written inside the organization, it is internal correspondence. Number 2, you can write to somebody inside the organization. Number 3, it is a document statement which you want to share, any information which you want to share with anybody in the group. बोले ना फिर लगा. आइवन का किसका बोला? How will you introduce the word memo? So the word memorandum is derived from a Latin word, memo share. Latin word क्या है? Memo share. Sorry. Memoria. Memo rare which you share. Which means to remember, to recollect, to remind. Basically to remind somebody. And it is a memo to remember. कोई मेमो आपको देता है तो आपको भूलना नहीं. In law, a memorandum means a document recording terms of any contract. किसी कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्डिंग को मेमो कहते हैं. इन लॉ को इससे मतलब आपको नहीं. You don't need to write down. You know this one. The third is the plural of memorandum is memoranda.
मेमोरेंडम्स तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन सिंगुलर इज मेमोरेंडम, प्लूरल इज मेमोरेंडम. And the fourth point is it is commonly known as, by its abbreviation, which means memo. You will definitely write something, I know. Abbreviation is MEMO, memo. Write the points in short. Do not write the entire sentence. You are taking notes as per your understanding. For example, abbreviation, short form. Viz, for example. What are the advantages of a memo? The advantages are like it is quick and convenient. Quick means you can send it to somebody instantly. Convenient, easily sent. Simple. Inexpensive means not mean simple. Inexpensive means not costly. And third is it is a so that when you need to show a proof, this is a proof that yes, I have given a memo. Don't talk. Memo should be designed to get your message across quickly. कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि आपका मैसेज तुरंत जिसको भी देना चाहो आप वहां तक पहुंच जाए. It is designed to reach quickly. Advantages. Busy people do not want to waste time reading unnecessary information. तो बहुत ज्यादा नहीं लिखते हुए आप टू द पॉइंट लिखेंगे ताकि आपका मैसेज इमीडिएटली कहीं पहुंच जाए और तुरंत वो बंदा पढ़ के एक्शन में आ जाए. What is the purpose of a memo? To inquire when you want to ask anything, when you want to gain information, you inquire. You want to inform. You want to report some event, some happening, some incident. To remind or to promote goodwill. Goodwill का मतलब क्या होता है? Interpersonal communication improve होता है ताकि knowledge sharing is always good. Difference, lots. It's very different. It's formal. Write down the characteristics of a memo.
clarity, conciseness, unity of theme, and informal tone. What do you understand by clarity? And why is clarity important? Clarity. A memo must be clearly written because an unclear and vague memo will confuse the reader. ये कौन इतना बात कर रहा है? Are you talking or writing? What is the meaning of vague? नहीं, जो चीज क्लियर नहीं है, वेग मैसेज है, अनक्लियर, कंफ्यूजिंग. बात स्पष्ट नहीं करके, बात जो कह रहे हैं घुमा घुमा के कर रहे हैं, मेन बात नहीं कर रहे, स्पष्ट नहीं हो रहा मैसेज. You're not writing? आपने लिखा? लिख लिया. लिख लिया है? ये पॉइंट लिख लिया. The effectiveness the second point is conciseness. The effectiveness of any memo depends on it being concise. What are you talking? कोई लगातार गप कर रहा है. Concise and direct memos are more effective. A memo should contain only essential information. What do you mean essential? Important. Avoid unnecessary explanation, repetition, wordy expression. What do you understand by wordy expression? Putting in too much of words. And amplification. Do not amplify. Do not magnify. Do not make it large. Do not exaggerate. बहुत बढ़ा चढ़ा करके descriptive नहीं बनाना. And ensure that memo makes its point with fewest possible words. You will not have any problem in MCQ in your external exam. डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि कहीं से भी MCQ आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. What do you understand by unity of theme in a memo? एक टॉपिक होना चाहिए, एक टॉपिक के संदर्भ में जो लिखना है लिखिए. अगर आपको 5 कंसर्न किसी को देना है, राइट 5 मेमोज. एक ही में 5 नहीं लिखिएगा, एक थीम पे, एक यूनिटी, एक थीम. A memo which does not have unity of theme distracts the reader. मतलब उसका ध्यान भटक जाता है.
and the purpose of writing or giving a memo will be defeated. मकसद ही पूरा नहीं हुआ कि आप एक बात कर रहे हैं कि चार बात कर रहे हैं कि क्या important है क्या unimportant. An important way of ensuring unity in a memo is to make sure that it deals with only one topic. For example, if you are the HR and you're writing to your subordinate of too much absenteeism, leave taking. So talk only about absenteeism, no? Don't talk about anything else. So unity of theme means one topic at a time to avoid any confusion in the reader. And then there's the informal tone. What do you mean by the term informal tone? Conversational. बोल चाल की भाषा. You write the way you speak. Why? Because as the writer is likely to be familiar with the reader, personal tone may be used in memos. A very formal tone might sound intimidating. What is the meaning of intimidating? कि बहुत formal tone डरा सकता है. Intimidating means fearful, किसी को डरवा देना. ऐसा कुछ मत लिखिए कि पढ़ने वाला डर जाए. Fearful to cause fear. डर पैदा करने वाला. इंटिमिडेटिंग मीन्स फियर पैदा करना, डर पैदा करने वाला. ऐसा कुछ मत लिखिए कि बंदा डर के मारे ऑफिस में आना छोड़ दे. आप पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. ऐसा कुछ लिखने का नहीं होता है. Parts of a memo. सबसे पहले होता है हेडिंग. Second is opening part. Third is body. And what are the parts of a letter? Parts of Memo. ये तो मेमो. हेडिंग के कितने पार्ट होते हैं?
Example first is heading. To, from, date, subject. To, from, date, subject. आप बनाइए टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, लिखिए अपना, लिखिए टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट बनाइए ना. टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट. यू आर राइटिंग टू एन असिस्टेंट मैनेजर. लिखिए अपना नाम. टू लिखिए, फ्रॉम लिखिए, डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए. फ्रॉम अपना नाम लिखो. Assistant. टू किसी का नाम लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए. फ्रॉम अपना नाम लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए, डेट लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए. ये हो गया हेडिंग. अब सेकंड इज ओपनिंग पार्ट. ओपनिंग पार्ट में बस एक ही पॉइंट आता है, आप लिखेंगे आप मेमो क्यों लिख रहे हैं. सब्जेक्ट के बाद होता है ओपनिंग पार्ट. वन लाइन विल बी व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. दिस इज रिगार्डिंग लेट कमिंग. दिस इज रिगार्डिंग वर्क नॉट डन ऑन ड्यू टाइम. तो किसी भी कंसर्न के लिए दिस इज रिगार्डिंग एनी कंसर्न. कोई काम आपने दिया था, आपका काम हुआ नहीं हुआ. It has been observed that you are taking too much of leave. तो पहले स्टेट कर दीजिए पर्पस, why you're writing a memo at all. उसके बाद आप लिखते हैं मैसेज. ये एग्जाम्पल छोड़ दीजिए. थर्ड पे आ जाइए. अब आप लिखिए कि वाई समबडी, आप क्यों लेट आ रहे हैं या आप क्यों लीव ले रहे हैं इतना, उसका आप कारण बताओ. थर्ड इज द बॉडी पार्ट. राइट द एक्चुअल मैसेज. For example, it has been observed that you are taking too much leave, which is causing great inconvenience in the office. Please make sure that you do not take so much of leave, and I hope now your problem has been solved. कि problem होगा तभी तो कोई leave ले रहा होगा ना. I hope by now all the problems have been solved, and now you are in a position to get back to office. ऐसा मत लिखिए कि नहीं आएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा. तो क्या हो जाएगा, इंटिमिडेटिंग हो जाएगा, वो बंदा आएगा ही नहीं. The third is the body part. Second was the opening. Third is the message part or the body part. And the lastly, it is the conclusion. Make a courteous closing statement. Do not use sincerely or the letter like ending.
थैंक लिख सकते हैं। Name भी signature. वो भी ऑप्शन इनिशियल्स डाल सकते हैं अपना। क्या हुआ? नया क्या है? चलिए, आपको इतना ही तक बताना था। बस ये सब हम लोग को नहीं करना आगे वाला इतना नहीं पढ़ना है।